Hello, good morning, dear students. This is Neeraj Paul from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. I welcome you to online classes. So, dear student, today I am going to explain the exercise of chapter 6, and this is the part 2 of chapter 6. Okay. So, yesterday I explained about web browser, and today I am going to explain about ISP. Dear students, ISP is stand for Internet Service Provider. To access the internet, one must have an internet connection. An internet service provider is an organization that offers you internet access in exchange for a fee. Some examples of ISPs are Airtel, Vodafone, MTNL, BSNL, Idea, Reliance Jio, etc. So, dear students, ISP is stand for Internet Service Provider. You have to remember it. The full form of ISP is Internet Service Provider, and it is very important thing to connect with the internet. If you don't have any ISP, then you can't use internet. It is very important thing. So if you want to use internet, so first of all you have to take an internet service provider. You can use any internet service provider like Airtel, Vodafone, MTNL, BSNL, Idea, Reliance Jio, etc. Now here you can see info box, and here you can see let's review. Here you have to match the following. You have to do it by yourself. Dear student, the basic requirement for an internet connection are modem, data transfer media, internet service provider. Modem is a device that acts as a link between a computer and internet. Modem stands for modulator and demodulator. Data transfer media is used to transfer data from one computer to over the internet. Next is opening a web browser. Okay students, our next topic is opening a web browser. Dear students, to use internet, make sure your computer has an internet connection. अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके कंप्यूटर से कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन कनेक्ट है या नहीं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बी ओपन अ वेब ब्राउज़र. So if you want to open a web browser, then first of all make sure your computer has an internet connection. आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. That is provided by an internet service provider. Then you can open a web browser. Dear students, Microsoft Internet Explorer is the default web browser of Microsoft Windows 10. Microsoft Windows 10 का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्लोरर होता है वेब ब्राउज़र, वो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर.
Here you will learn how to open the Google Chrome browser. If you want to open Google Chrome browser, then you have to follow some steps. First of all, you have to click on the start button. Dear student, look at the figure number 6.1. This is the start button. You have to click on it, and then after you have to click on the all program option, and then after you can see Google Chrome. Just you have to click over the Google Chrome option. Okay, this is the Google Chrome, or double click on the Google Chrome icon present on the desktop. अगर आपके डेस्कटॉप पे गूगल क्रोम का आइकन बना हुआ है तो आप वहाँ डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका जो है गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा. ओके, और यू कैन ऑल्सो ओपन गूगल क्रोम by clicking on the Google Chrome icon from the क्विक लॉन्चर. क्विक लॉन्चर में भी आप जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे भी गूगल क्रोम का आइकन अवेलेबल होगा. वहाँ से भी क्लिक करके आप जो है क्रोम को ओपन कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. ओके, यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, click on the Google Chrome icon present on the quick launcher on the taskbar. A Google Chrome window appear as show figure 6.2. देखिए बेटा, इस तरह से विंडो अपीयर होगा आपके सामने जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे. ठीक है, हियर यू कैन सी दिस इज द टैब for each website. there is a separate tab. आप इस टैब का यूज करके जो है अलग अलग वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द बैक बटन. क्लिकिंग ऑन दिस बटन takes you to the previous page, and this one is the forward button. Clicking on this button takes you the next page. अगर आप किसी भी वेबसाइट में बैक स्टेप लेना चाहते हैं तो आप जो है बैक बटन पे क्लिक करेंगे. अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे. एंड हियर दिस इज़ द एड्रेस बार. द वेब एड्रेस और URL इज टाइप्ड हियर. इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी वेब ब्राउज़र. ये बेटा आपका वेब ब्राउज़र एड्रेस है, सॉरी ये एड्रेस बार है. जो भी वेबसाइट्स आपको ओपन करनी होगी आप यहाँ पे वेबसाइट वेब एड्रेस टाइप करेंगे. ओके, नाउ हियर यू कैन सी कीबोर्ड शॉर्टकट. डियर स्टूडेंट्स, इन गूगल क्रोम pressing the F11 key activate the full screen mode, and pressing it again brings the screen back to normal. Dear student, if you want to use Google Chrome in full screen, then you have to press F11 key from the keyboard, and pressing it again brings the screen back to normal. Dear students, Chrome 77 is the latest version of Google Chrome. It was released in June 2009. Now come to the next topic, that is opening a website. Dear students, after opening a web browser, follow the steps to open a website. First of all, enter the URL or web address of the website in the address bar. For example, www.nationalgeographic.org. This is the address bar. Type your address in the address bar and press enter. Then you will see
The home page of the website appear on the monitor as figure 6.3। जैसे ही आप nationalgeographic.org टाइप करेंगे बेटा, आपके सामने होम पेज इस तरह से खुल के आएगा, जिस तरह से आप फिगर नंबर 6.3 में देख सकते हैं। ओके, you can type any address if you want to take any information about internet, then you can type more information about internet and you can get information about internet. Now today's session has gone over, students. Bye bye, have a good day. Thank you for watching my videos.